से पिक्चर क्लियर होती है। बट अगर हम थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो देर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस जिनसे हमें इस तस्वीर के बारे में ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है। And you see there are these tiny boats lying there. They're not actually tiny. They look tiny because of the size and the magnitude of the rocks around it. So somebody had said it looks like a canyon. It is a canyon. लेकिन वो जो एक उसका वो awful और वो amaze करने वाला aspect है ना, you don't get to it right away until you have some point of reference, some frame of reference to bring you to that सरप्राइजिंग कंक्लूजन कि ओ वाओ, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द डेप्थ ऑफ द कैनियन थ्रू द वाटर सरफेस। सो दैट काइंड ऑफ अमेजेस यू कि कितनी स्केरी और कितनी खूबसूरत डायग्राम। इसी तरह एक और पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दिस इज अ वेरी वेल नोन क्वेश्चन इन philosophy. If a tree falls in a forest and there's nobody there to hear the tree fall, has the tree really made a sound? Apparently it looks like a stupid question. Of course it has made a sound. But how many of you think it has and how many of you think it has not made a sound? ये हमें वापस sound की definition पे ले जाता है. What is sound? Sound is not those waves of compression and rarefaction in the air molecules. Sound is not the vibration of our eardrums. Sound is not something that the tree makes when it crashes. It is the perception we get from those compression and rarefaction waves when they hit our ears. ठीक है? So वो जो perceive हम कर रहे हैं वो sound है. Try to think about it. ये थोड़ा सा सोच, आज वाली slides बहुत थोड़ी हैं, लेकिन at every slide we will need to stop and think about it. So can I define sound that way? Oh, how else can you define sound? In what sound? So the scientific definition we go about it, that, but that's What is the scientific definition of sound? compression and rarefaction. That's sound waves. That's just waves in the air. There is this disturbance that the tree produces. It sends a wave of compression and the molecules come back and it is followed by a wave of decompression. Right? That still happens. अगर वहाँ पे वो sound waves हैं, sound की perception क्या है? When I talk, when do you hear? Also related to space. यही मैं बताने लगा हूँ. दूसरी एग्जाम्पल इसकी है, there are multiple examples, I'll get to you. दूसरी एग्जाम्पल विजन की है, स्मेल की है. Smell is a sensation that certain concentration of air molecules, concentration of chemical molecules in the air makes when we inhale a whiff of air, right? अगर वो हम inhale करते हैं, वो उन neurons को stimulate करती है, वो perception brain perceive करता है, तब smell आता है. What was the commonest symptom of COVID जो scary था, जिससे लोग घर के एकदम आ जाते होते थे, तो ओह COVID हो गया. Loss of smell, right? So you don't say कि वो smell, वो you say the smell is lost. The air molecules are still there, the chemicals are still there, but the sensation is lost. Gee. Doesn't it make something like sound so subjective? Yes, it is. That's what I'm trying to emphasize. All perception is subjective. ये हमने लास्ट टाइम बात की थी ना कि वो जो इनर रियलिटी है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते. And everybody has that perception inside that person and is individual. So, for example, we say if somebody who's deaf doesn't really hear sound, but they do feel sound. Yes, yes. आपने अच्छी बात की. I'll give you an example of a person who did not have ears. I've met that person. हम स्कूल में थे और हमारे लिए बड़ी फैसिनेटिंग बात थी कि उसे कान नहीं, बट
he could make normal conversation like you and me. There was no mechanism for him to convert the sound waves into that mechanical compression जो हमारी middle ear की bones करती हैं. But he had a nervous mechanism. Somehow he had learned to perceive the sound as it vibrated the air in his sinuses. Yes, आप bone conduction से headphones सुनते हो. आप उस हेडफोन को यूं कान के करीब रखो तो यू डोंट हियर इट. आप अल्टीमेटली टच करते हो जब बोन के साथ, दैट्स व्हेन यू हियर द साउंड. उसका मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन इज टोटली डिफरेंट. सो ही वाज हियरिंग यूजिंग दैट सिस्टम ऑफ हियर. ठीक है जी भाई. I feel like a useful way to understand this is to pose it as a scientific question. Say that you believe that the tree does make a sound. Your limitations are that no one can be around the tree when it makes that sound. How do you prove that the sound is made? I mean, we can make a lot of cases to prove or disprove this statement, but I get what you're saying, but that loses the essence of what I'm trying to convey. Sound is subjective. Sound is individual. इसी तरह हमारी बाकी सारी सेंसरी परसेप्शन भी जो है वो इंडिविजुअल है. साइनेस्थीट्स में क्या होता है? साइनेस्थीट्स में एक सेंसेशन की बजाय स्टिमुलस कोई और आ रहा है, वो परसीव कुछ और कर रहे हैं. Well, they learn to interpret it differently. I'll get to you, don't worry. We learn to interpret it differently because we are taught कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, and the other people are, that's how they are perceiving. But वो खुद ऐसे perceive नहीं कर रहे. इसी तरह deaf, those who can't perceive sound, they learn, how do they learn to read? Braille. Sorry, the blind. Sorry. The blind, they don't see, but how do they read? They read using Braille. अब वो Braille क्या है? It's just a bunch of dots made in a certain arrangement, and उनकी fingers वो perceive कर करके they learn to perceive those dots as letters. वो आपको consciously dots count करके कि ये 6 dots हैं और 6 इस तरह पड़े हुए हैं, that would mean an E. They don't do that. The moment their finger goes over the arrangement of dot that means it's E, they know it's E. इसी तरह digit 56. What do you perceive when I tell you that I have 56 matchsticks in my pocket? आपको क्या, इससे क्या समझ आता है? I have matchsticks in my pocket which are 56 in number. बोलो बेटा, इसमें डरने वाली क्या बात है? The point I'm trying to make is वो जो 56 की figure आपके जेब में आ रही है, that figure does not force you to think from 1 to 50 to 54 to 56 to make up an idea of what 56 would be. 56 itself per se has a meaning. ठीक है? So इसी तरह जो हमारी sensory perception है वो individual है. वो obviously environmental stimuli पे dependent है. Stimulus आएगा तो वो हमारी perception evoke होगी. So when a tree falls in the forest, it does send you a stimulus. But is there sound? So either answer is correct. Yes, जो कहते हैं sound है वो भी ठीक है, जो कहते हैं sound नहीं है वो भी ठीक है. But sound, by the very technical definition of it, is the perception we have in our heads. And when there is nobody there to perceive that, there probably is no sound. Sound only exists when
the neurons make that perception in a conscious being. जब हम कोई चीज सोच रहे होते हैं तो even then if I'm thinking about what you said I can actually Visualize, hear, yes. So is that also like a perception of That's not perception, that actually is giving meaning to that perception जो आपको इस वक्त हो रही है, और वो meaning आपकी memory से भी आ रहा है, आपकी knowledge से भी आ रहा है, आपके past experiences से भी आ रहा है, और यही meaning मेरी sound के सारे character से भी आ रहा है. अगर मेरी sound में loudness है, थोड़ी सी tone ऐसी है, visual symptoms जो visual perception जो साथ है वो और तरह की है, you'll perceive the same sentence as being very aggressive. और अगर उसके साथ ये सारा paraphernalia और तरह का है तो you may perceive it differently. To the extent कि उसका meaning भी change हो जाता है, और हर बंदे को उसका meaning different perceive हो सकता है. That again proves कि जो हमारी perception है वो subjective है. जी बात. This reminds me of something that I saw, like something about video games. First-person video games. The game that you're playing renders a world around the player, and anything outside of that render distance, the player is unable to get to unless he actively makes an effort to go move in that direction. Like one way I'm trying to understand is like our senses are what determine our rendering distance, and anything outside of that is Yes, it's not real. Our perception, yes, they aren't real. Our perception, that's what I'm trying to tell you. Perceptome, जो सारा sum total है of all the perception, is very individual. Right here, right now, we are, how many of us are here? Like 20 people. और हम सब की perception, regardless of the fact कि हम positional variation को भी consider करें, आप उसको अगर ना भी consider करें तो एक ही point की, एक ही तरह की perception हम सबकी different होगी. Because we all give it a different meaning, and the perception is colored by our emotion. ये हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है. ये आखिरी 2 lectures are based on what we've already read. So perception is not absolute. When you said sensation is perception is connected to emotion. So for example, the concept of sensitization, वो एक physical उसमें भी होता है. For example, लोगों की बात कमजोर हो जाते हैं, तो उनको sound waves जैसे इनकी perception नहीं रहती. But for example, emotion wave, for example, if a kid dies, say, so that because it's not, we can't actually see that, and it isn't intuitive, in front of us. Yes, we're sad for like a second or two, but then we move past that. It doesn't stay in our memory. Is that how it works as well? It also is how it works. So there are other ways as well. Perception बहुत सारे extraneous factors के ऊपर dependent है. Perception is dependent on the very stimulus that you're getting, but perception is also dependent if there is a person who has never seen a hedgehog, for example. There would be, you can imagine people, मैंने real life में hedgehog पहली दफा मेरा ख्याल है किसी zoo में when I was well above 40 देखा. ठीक है ना? There would be people who have not seen everything in the world, right? जब वो एक hedgehog को देखेगा, as if the hedgehog is not moving, or even if it is moving, उसको ये थोड़ा सा अंदाजा तो हो जाएगा this is an animal, but it will not have the idea of how sharp those spikes are, and they get, stuck in your skin and they fall off the hedgehog, and they cause a lot of pain. जब तक उसने उससे पहले वो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, चाहे विजुअली, चाहे किसी स्टोरी में, चाहे किसी के बताने से, जब तक वो उसके दिमाग में परसेप्शन नहीं होगी. ये आपने वो हजरत मूसा का किस्सा सुना हुआ ना कि वो he was just to see कि वो सूझ बूझ रखते हैं कि नहीं. He was shown 2 shining objects, and one of them was a hot coal, the other one was a diamond. And obviously, by the glitter of the diamond, as Musa was a kid, he was drawn towards that diamond. But Angel Gabriel came and he directed Musa towards the hot coal. But Jomi, why do you think kids are not afraid of touching the heater
or poking their finger into the electrical outlet, or फैन के वो जो चल रहा होता है उसकी जाली के अंदर उंगली डालते हुए उनको क्यों डर नहीं लगता? Because they've never experienced the pain that comes off this instinct. So perception colored है, perception हमारी memory से colored है, हमारे emotion से colored है, हमारे ये कल मैं scroll कर रहा था Facebook, तो वो shorts आ गए, I automatically, जैसे every one of us gets drawn to them, I started scrolling those shorts. और उसमें there was one very short clip about a guy who was fighting and then suddenly tries to jump off a rail, वो जो railing होती है balcony की, and jumps 2 floors, falls, hurts, but gets up and runs away. Consciously उसको खड़े होके कहते हैं ना भाई छलांग मार, वो कभी ना मार. So उस वक्त आपके emotional state भी आपके actions को, आपकी perception को color कर देगा. उस वक्त वो perceive ही नहीं कर रहा था कि this could hurt or this is too high. Right? So मेरा बताने का मतलब ये है कि perception बहुत subjective है और बहुत सारे factors हैं जो उसको influence करते हैं. जी. So for something like in terms of musical note, 440 hertz we know is the note A. So wouldn't everyone perceive that the same way? हमें इसलिए वो perceive होगा क्योंकि हम म्यूजिक को एक्सपोज हुए हुए, राइट? साउंड परसेप्शन तो वो एक ही 440 हर्ट्ज जो प्रोड्यूस कर रही है वो वही प्रोड्यूस करेगी इन एवरीबडी, लेकिन वो म्यूजिकल नोट परसीव होगा कि नहीं होगा डिपेंड्स ऑन योर प्रायर एक्सपोजर. एक गांव में कोई बंदा या गांव छोड़ दो अरब डेजर्ट में, या वो उसको भी छोड़ दो अफ्रीकन जंगल में कहीं पे जो बंदा जिसने other than the beating of the drum या howling of the monkeys कुछ नहीं सुना हुआ, उसको वो नोट pleasurable perceive करेगा या नहीं करेगा? I really doubt कि वो करेगा. Western classical music and the Yes. opera का concept है, people are crying by listening to it, लोग कह रहे हैं, And we don't feel anything. Yes, there you go. There you go. People are sitting and paying €1,000 per Guyana के अंदर in the best possible percentage, and they're crying रोना आ रहा है, and आप टीवी को देखें वो क्या कह रहे हैं? What are they True. listening to? So जो आपकी perception है ना, It's a lot. not just the meaning that you give to the perception itself is colored. जी बात, आपके पास क्या? Is our brain like what I'm thinking right now is that 440 hertz thing. That's probably like an average of like a bunch of people heard 440 hertz and they all agreed that it was A, but maybe someone's hearing 440.5 or 440.3 and they're also associating it. Have you ever tuned your ukulele? Yes. You have. How do you tune your ukulele? With an app. Oh, okay. Not a pro. Oh man, okay. I mean, we tune things by ear. और वो किस तरह करते हैं? By comparing two notes. ठीक है? वही नोट एक स्ट्रिंग पे बजाया, वही नोट एक और स्ट्रिंग पे बजाया. If there is a difference of a single frequency, what do you get? What is that? Experience pattern. जिससे वो constructive और destructive inference आती है, तो वो vibrato आता है आपकी. Vibrato comes in at the frequency which is the difference between the two playing notes. So अगर एक frequency का फर्क है 440 और 441 में, वो 1 per second की वो fluctuation आएगी. So हमारे ears perceive करते हैं, हम उसको interpret कैसे करते हैं, that's totally different. Anyway, we have to move on. So as far as I believe, किधर गया यार? I don't think we make the tree makes a sound if there's nobody else to hear it. Gee, sorry. Yeah, you were talking about perceiving those sounds when it comes to music, but a lot of times people who produce music or are involved in like music in terms of instruments tend to hear a lot more as well. Like in music, like
that has less to do with perception and actually being able to listen to the nuance, like Yes. nuance in between. There was this one time, I play music. There was this one time I was listening to a bass note, और there were friends जिनके साथ हम बात कर रहे थे. I was flabbergasted by the riff that the guy was playing. और मैंने इर्द गिर्द सबको देखा. I know they're all friends, they all like music, they've all been listening to music, but they never played music. And nobody was moved. मैंने मुझे कहा यार, look at the riff this guy is playing. Oh, is he playing some riff? They could not, filter out the rest of the music to make that bass higher so that they can concentrate on the bass. So, मेरा बताने का मतलब ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, हमारी sensory perception कलर होती है बहुत सारी चीजों से, हमारे मूड से, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से. वो जो आप बात कर रहे हो, अगर उसने वो पहले उस तरह परसीव करना नहीं सीखा हुआ या बहुत सारा म्यूजिक नहीं सुना हुआ, उसको कभी भी आवाज नहीं आएगी. अगर मैं किसी बंदे को जिसको बहुत अच्छा म्यूजिक का शौक भी है, उसको भी कहूं कि म्यूजिक में गिटार की साउंड सेपरेट परसीव करो, ठीक है. कुछ तो म्यूजिक रिकॉर्डिंग में ऐसे होता है कि वायलिन को वो लाउड कर देते हैं ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, तो यू कैन एक्चुअली परसीव व्हेन इट्स प्लेइंग. लेकिन जब एक कंटिन्यूस बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, उसमें आप इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड को परसीव नहीं कर सकते. यू एक्चुअली परसीव द एक्सपीरियंस. That's because our ears are not tuned to pick up those individual sounds. So perception is subjective, and if we base the existence of the reality around us on our perception, what does that make that reality? Subjective. Sir, जिस तरह आपने पहले बात की थी Sorry. Sorry. नहीं, go ahead. Sir, we previously talked about having visual diets. So can we have sound diets as Yes, well? yes. So we can train our Train our ears. That's what the classical music players do. So वो one of my friends was, बल्कि वो आपको हमने जब guest lectures की बात की थी, तो we asked him to come and present to you as well. Dr. Usman की बात कर रहा हूँ. At one time, me and him, we used to play music, and at one time उसको classical music का शौक चढ़ गया. और वो एक उस्ताद परवेज पारिस साहब हैं, उनके पास गया, and he said कि जी मैंने शागिर्दी लेनी है. He's a very good singer, Usman. Ultimately, उन्होंने उसको सिखाना शुरू कर दिया. For first 3 months, उन्होंने सिर्फ, and ये मैं आपको first hand बता रहा हूँ experience, सिर्फ middle C सिखाया. Just one note. You cannot imagine ये किस तरह की बोरिंग थी. Just one note. उन्होंने कहा नहीं, वो रोज जाता था, उन्होंने कहा नहीं, इसको पक्का करो. 3 महीने उसने सिर्फ सा की प्रैक्टिस की. So वो ये करता था गाड़ी में, उसने वो नेट पे से तानपुरा का वो रिकॉर्ड किया हुआ था, और वो जो गजलों के पीछे नहीं एक बड़ा सारा वो इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है जिसमें सिर्फ वो हल्की हल्की सी स्ट्रिंग को प्लग करते रहते हैं. दैट्स कॉल्ड अ तानपुरा. So वो एक नोट, उसमें all 4 strings are on a single note, so that kind of gives you the background note. तो वो उसने रिकॉर्ड किया हुआ था, वो प्ले करता था और साथ साथ उस की प्रैक्टिस करता था. Anyway, yes, हमारी hearing भी इसी तरह कर सकते हैं हम ट्रेन. Sight, smell, everything हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, given we do enough practice. Second weird concept, जब हमने अभी बात की कि हमारी सारी रियलिटी का कॉन्सेप्ट ही सब्जेक्टिव है, तो आपको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, the cat in the box, सुना सबने होगा. How many of you know what it means, what it implies? Anybody? 2, 3. Okay. The reason I ask is it's a difficult concept to understand. Apparently, just if the tree falls in the forest sounds a very stupid question. वो cat in the box experiment जो है, thought experiment, वो भी बड़ा stupid लगता है. लेकिन उसकी implications, that is what quantum physics is based on. The interaction of the observer with the real world. And according to that experiment, the real world findings depend on the observer. So if there is an observer, that is when
real world can be perceived. And if there is an observer, that is when the real world actually exists. And that takes us back to the Cartesian famous quote, I think therefore I am. अगर कोई बंदा है उसको perceive करने के लिए, that's when the reality will exist. Time का भी आपने बहुत दफा सुना होगा कि time के बाद, how do we divide time? There are three basic periods of time. One that has not yet come, which we call the future. One that we are experiencing right now, which we call the present. And one that we think has already gone by, and that we call the past. अब ये past, present, future mathematically अगर आप equations में put in करो, तो they are not distinct. They are all interconvertible. ठीक है? And that is why mathematicians think that time travel is possible. ये वही equation में minus कर दो तो आप past में चले जाते हो, plus कर दो तो आपको future में चले जाते हो. अब ये सारे I see you all smiling at this. Mathematics में तो बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें prove हो सकती हैं. But recently these things have been discovered as only the perception of our brains. 100-meter sprint. Fastest बंदा कौन है अभी तक हमारे दुनिया में? World record किसका है? बोल्ट, यस. बोल्ट से पहले जब वो 10 सेकंड बैरियर क्रॉस नहीं हुआ था, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ. There was this study conducted on sprinters and they were timed and recorded to notice कि कौन कितने डिले के साथ भागता है after they're asked to run. And how are they all uniformly asked to run? By hearing a shot fired, right? और उस स्टडी में इतनी एक revelatory finding आई कि they were all professional runners, they had all been training for this, and they all started to run a fraction of a second before they could perceive the shot. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि the shot was fired, they started running and they heard the shot because वो अंदर जाता है, अंदर वो middle ear में वो convert होता है into from mechanical waves into compression waves fluid को हिलाती है, fluid like neurons के hair cells हिलाता है. So there is a whole sequence of events before we can actually perceive the sound, and there is understandably a certain amount of delay. Sorry आपका रह गया था अभी कुछ. So उस delay को जब उन्होंने calculate किया, that the delay when we are consciously aware of that sound, that distance, that time, that delay is more than the delay that those runners experienced before they started running. Okay, ये तो समझ आ गई कि चलो उन्होंने पहले भागना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि ब्रेन में कोई शॉर्ट सर्किट मैकेनिज्म है जो उनको भगा देता है पहले और हियरिंग बेशक बाद में होती है. This is exactly what happens when we, step on a nail and we reflexly अपने limb को retract करते हैं. वो retraction बहुत पहले हो जाती है, पेन बाद में होती है, because वो perception takes a longer time to travel up to our brains. लेकिन वो हम हाथ पहले खींच लेते, right? So यहाँ तक तो समझ आ गई. Then they were all asked about why they started running before they heard the shot. Secondly, बात ये थी उसमें कि कैसे, for example, आप जब आपने नेल को टच किया, अभी आपकी imagine you have not seen the nail, right? Yes, ये ऐसे ही होता है ना कि आप चल रहे हैं, barefoot हैं, आपने कोई चीज अभी देखी नहीं है. कांटा है, for example. हाँ, कांटा है और वो एकदम चुभ गया है. आप एकदम उससे पहले retract करते हैं before your brain actually perceives pain. So retract हम उससे pull away पहले कर जाते हैं, perception fraction of a second बाद होता है. How does it override the motor function? यही मैं आपको बताने लगा हूँ. That's the second part of that experiment with the runners. उन runners को उन्होंने कहा भी पहले आपने भागना शुरू क्यों कर दिया था? What made you run? None of them realized
that they ran before they heard the shot. They all swore that they ran after they heard the shot. फिर दोबारा उन्होंने रिव्यू किए, सारे टाइम कैलकुलेट किए. They had started before they actually could perceive it. There was no possible way for them to have perceived the sound before they started running. Here इसके ऊपर studies हुई. So this was the first study. ये मैं details निकाल के आपको दिखा दूंगा, मुझे अब exactly याद नहीं है कहाँ पे हुई थी, लेकिन this was what prompted the study of neural correlates of time perception. Okay. There is a small area in the, this is the only reference to neural correlates that we'll talk about today. आज सारा वाला जो है ना philosophical है, टाइम भी थोड़ा है, लेकिन ये बताना जरूरी था कि हिपोकैम्पस की हमने बात की थी at one time, जो मेमोरी से रिलेटेड है, which lies on the inner side of the temporal lobe, और वो hippocampus is the uppermost part of the inner side of the temporal lobe. Hippocampus के नीचे there is an area of the cortex we call the entorhinal cortex. It's called the entorhinal cortex because it is very densely associated with our perception of smell. और दूसरा, चूंकि वो hippocampus के साथ है, it has a lot of connections with hippocampus and it's got a lot of functional overlap in memory regulation. लेकिन this is the area that lights up when we consciously perceive time. जब हम ये perceive करने की कोशिश करते हैं कि time गुजर रहा है, और time की जो passing की perception है वो इस area में. It's got a very complicated circuitry. वो complicated circuitry की detail में जाने की जरूरत नहीं है. जो चीज important है कि ये एक छोटा सा area है below amygdala. ये हमारा hippocampus है, amygdala है, और उसके बिल्कुल नीचे ये entorhinal cortex. A very small part of the entorhinal cortex is called the time correcting mechanism. This is where the brain is believed to have heard things which it is supposed to hear before the other things. Yes, this is the area, entorhinal cortex, जिसका एक small part है जो हमारे, जिसको हम कहते हैं time correcting mechanism यहाँ पे exist करता है. Time correcting mechanism का मतलब है कि although हम perceive किसी और sequence में करते हैं events को, लेकिन ये वो area है जो उन events को उस temporal sequence में store कर देता है जिस temporal sequence में वो store होने चाहिए. So when you're supposed to hear the shot before you run, and even if you start running before hearing the shot, ये area उसको सारे को sequence re-sequence करता है और hippocampus में ऐसे store करता है कि पहले fire आया, फिर वो हमारी sound perception हुई और फिर हम भागे. हालांकि this is not the actual course of events. What is the time direction? Like, ऐसे हो सकते हैं कि सबके mind time उसी वक्त detect कर रहे हैं. Like they haven't got a stimulus yet. Good, very good question. ये चीज अब मैं आपको इसलिए ये सारी बैकग्राउंड बताई है कि टाइम की परसेप्शन भी सब्जेक्टिव है. आपने कुछ पूछना था बड़ी देर से, भूल गई? अच्छा चलो रहने दो, कोई बात नहीं बनती है, कहते टाइम परसेप्शन. नहीं याद हो गई है. How does it know what order to take off? Yes, that's not. Point कहते हैं reference point क्या? हाँ, What is the reference? हाँ, there's no reference point. तो इसमें होता ये है कि हमारे stereoscopic vision. What is stereoscopic vision? It is the 3D perception of the visual world around us that we get from looking at the world from two different angles, right? अब वो दो different angles जब आप एक cube को देख रहे हो, try to imagine what I'm trying to tell you. When you're looking at a cube from two different angles, मेरी आवाज ठीक आ रही है, मैं बहुत हिला जुला रहा हूँ. From two different angles, एक एंगल पे क्यूब एक तरह से पड़ा हुआ नजर आएगा, दूसरे एंगल से क्यूब दूसरी तरह से पड़ा हुआ नजर आएगा, राइट? वो दो डिफरेंट
पर्सपेक्टिव से हम देखें, आप दो इस एंगल से तस्वीरें खींच लो और कंप्यूटर से उन दोनों तस्वीरों को मर्ज करने की कोशिश करो. Will you ever be able to do that? No, you can't. वो लेंथ ऑफ एन एज फर्क है, उसका एंगल दैट इट सबटेंड्स फर्क है. You can never overlap those two images क्योंकि वो images हैं ही फर्क, right? हाँ बता. But our brain merges them to the two images, corrects those errors, and makes us believe that this is a three-dimensional object. ये it's a big statement कि उसको correct करता है. हाँ. वो हमारी perception उसको नहीं correct कर रहा. वो हमारी sensation को correct नहीं कर रहा. It corrects our perception. क्योंकि perception is subjective. मैं बार-बार हर चीज पे emphasize इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत subjective है ये बात. It's a bit of an unfair comparison because our eyes are getting a live feed, Right. not just static images. Time भी तो live चल रहा है. But like if you gave a computer like enough images, it would be able to do the same. No? It still wouldn't. आप उसको डिफरेंस को छोटा करते जाओ ad infinitum, और फिर भी अगर आप उसको कहो कि मर्ज करें तो however small, there is still a difference. It will appear to have made the correction, but actual correction नहीं हुई होगी क्योंकि वो लाइंस के एंगल फर्क है, लाइन की विड्थ फर्क है, वगैरह वगैरह. लेकिन हमारे ब्रेन में आपको कहीं पे लगता है कि आप दो इमेजेस देख रहे हो. It's also in this sense that also 2D space में कह रहे हैं, but for 3D scanning that's kind of what it's saying, where दो reference points हैं जो देखते हैं उसको फिर 3D environment में लेते हैं. हाँ. हम भी लोग 3D environment में perceive it, and that's why it's the different image. What you're saying is if you merge करें तो you're forcing the three-dimensional object into two-dimensional, reducing or No, you don't get my point. हम थ्री डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर एक पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम ओवरलैपिंग. वो चाहे मैं राइट पर्सपेक्टिव से देखूं चाहे लेफ्ट पर्सपेक्टिव से. मैं 3D ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं व्हिच इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मेनी रेफरेंस पॉइंट्स. वो रेफरेंस पॉइंट्स मेरे राइट पर्सपेक्टिव में टोटली डिफरेंट रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेफ्ट पर्सपेक्टिव में टोटली डिफरेंट. हम उनको दो पर्सपेक्टिव्स परसीव नहीं करते. That's what I'm trying to tell you. There is an area in the brain that merges those perspectives and makes us believe that we are looking at one object, not two, and that object has a depth as well. वो depth, इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल मेरे साथ कोई like when I was in ट्रेनिंग न्यूरोसर्जरी की हुई. रात को वॉशरूम गया, वॉशरूम में आके मैं लाइट बंद कर रहा था. आई वॉज हाफ वे थ्रू द डोर. मैंने ऐसे लाइट बंद करनी थी तो मैंने ऐसे बटन को देखा तो वन ऑफ माई आईज, ये बिल्कुल एक्चुअली बातें हैं क्योंकि मेरे दिमाग में हैं, दे रजिस्टर्ड. वन ऑफ माई आईज हैड ऑलरेडी गॉन आउट द डोर एंड द अदर वाज इन. आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट द लाइट बटन विद वन आई. मेरा कमरा, मेरा वॉशरूम, आई नो वेयर एवरीथिंग इज. कई दफा आप बगैर सोचे समझे भी हाथ मारते और वो सही जगह पे चल जाता है. लेकिन दैट डे मैंने बटन बंद किया तो आई कुड नॉट पुट माई फिंगर एट द राइट प्लेस टू टर्न द बटन ऑफ. मैंने फिर देखा है, ऐसे देखा है तो आई वॉज वेरी क्लियर क्योंकि दोनों आंखों से मुझे डेप्थ परसेप्शन हो रही. मैंने फिर दोबारा आगे जाके एक आंख को कवर किया है, बंद करने की कोशिश की है. आई कुड नॉट टेल कि वो मेरे आंख से कितनी दूर है वो बटन बिकॉज आई वाज लुकिंग एट इट फ्रॉम वन आई. और ये हाँ ये चीजें हमारे ब्रेन में कंटिन्यूअसली चल रही है. इसी तरह एंटोराइनल कॉर्टेक्स की जो मैं बात कर रहा हूं वो हमारे टाइम को करेक्ट नहीं कर रहा, वो टाइम की परसेप्शन को करेक्ट कर रहा है. So that the body thinks that this is how things occurred. वो आप पूछ रहे थे कि what is the frame of reference? Frame of reference is our own expectation. When we know that we should run after we hear the fire, that's how our brain, चाहे हमने पहले भी किया हो, ये कई दफा होता है सर
रॉब सुलेमान, वो क्या वो है वो जो गेम हम खेलते हैं, नहीं यार, बहुत सारी चीजों में है कि आप ट्रिगर से पहले रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। सॉरी, चिड़ी उड़ी वाली गेम और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप जब ट्रिगर आना होता है तो उससे पहले रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, राइट? और when the error is very little, you really believe that there is no error. अगर तो बहुत ही ग्रॉस एरर होगा कि आपने बिल्कुल ही पहले कर दिया और अगला बोला भी नहीं है, फिर तो आप प्रोसीड कर जाओगे। लेकिन जब एरर थोड़ा होगा तो वो एरर आपका दिमाग कहेगा कि नहीं था यार, वो बोल रहे थे तुझे। जी सर, तो जो पहले like when the runner start running before they hear the actual shot, is it the reflex action or like are they getting that stimulus? For example, light travel. भागना is a reflex action, वो तो learned reflex है, but that's a conditioned reflex. वो सिर्फ trained runner भागना शुरू करते हैं, not the ones who have never trained, क्योंकि वो reflex training से develop होती है। मैं उस reflex की बात नहीं कर रहा, मैं उस perception की बात कर रहा हूँ जो उनको हो रही है। उनको नहीं पता कि वो भाग रहे हैं पहले, they believe that they run after they hear the shot। ठीक है ना, वो ऐसे ही रहा है कि वो शॉट आता है, वो ब्रेन में जाता है, फिर वो भागते हैं, लेकिन परसेप्शन थोड़ी सी डिलेड है। मेरा सवाल ये था कि but how do they know run before, like right? They don't. The brain develops certain short circuits. अगर तो कॉन्शियसली करना हो तो फिर तो हम सब कर सकते हैं। This is all subconscious. ब्रेन में कोई शॉर्ट सर्किट डेवलप होता है क्योंकि आप रिपीटेडली वो कर रहे हो, और उस रेपिटेशन की वजह से शॉर्ट सर्किट डेवलप होता है जो before it goes to the cortex, maybe वो thalamus के level से motor system को stimulate कर देता है। We don't know that short circuit yet, but that's what is thought कि वो bypass, it doesn't actually bypass the cortex, it starts responding a lot before the impulse goes to the cortex because वो automatically वो बार-बार repeat हो रही है चीज, तो वो कहता है कि यार इस सारे ट्यूब को वेस्ट करने की बजाय मुझे So we are all at clear. Where does this stimulus come from? Like, अगर short fire नहीं हुआ तो how does the brain get some short circuit करते हैं और बेटा try to imagine, मैं आपको बता जो रहा हूँ कि short fire हुआ, उसके कान में गया, auditory sensation हुई, sensation अभी तक हमारे cortex में नहीं पहुंची। I am not aware that I have heard the shot. But there is a neural mechanism that has already started. तो thalamus तक गया, हमने कहा था thalamus is the grand relay station, हर चीज वहां तक जाती है before it goes to the cortex. तो thalamus तक गया, and then it will go using thalamocortical connections to the cortex. Perception, conscious awareness, तब होगी when it will reach the cortex. So ये mechanism trigger हो गया, but it has not reached the cortex yet. So it gets bypassed before it reaches the cortex to execute the response. Yes, yes, yes. वो एक टाइम क्लॉक आपके दिमाग में चल रही है, ready, steady, go. अब वो वो एक regular interval से चल रहा है. Maybe that can trigger them to run before this. जी बिल्कुल. It's a little weird. Everything is a lot weird. अभी बहुत सारा कुछ आगे रह गया. Let me rush through these things. ये reality की बात बाद में करेंगे. M.C. Escher. How many of you are familiar with this name? None. M.C. Escher, 1960s and 70s में there was this artist who painted reality and distortions of reality and different perceptions of reality. उसकी बहुत एक मशहूर पेंटिंग है. अगर आप गौर से इसको देखें तो ये पर्सपेक्टिव और ये पर्सपेक्टिव डायग्रामेटिकली एग्जैक्टली एक है. ये कर्व्ड एरिया आ रहा है, देन देयर आर स्टेप्स, और वो स्टेप्स भी ब्लैक ऊपर से हैं, व्हाइट नीचे से हैं. इधर भी एक कर्व्ड एरिया आ रहा है, देन देयर आर स्टेप्स, ब्लैक फ्रॉम द टॉप, व्हाइट ऑन द फ्रंट. लेकिन पर्सपेक्टिव देखो
इस खातून ने इस सारी चीज को एक पर्सपेक्टिव दे दिया है that we are looking at it from the top. How many of you can realize that this is an arch in this passage and we are looking at it from below? आप समझ आई? So ये वही चीज है, सिर्फ ये वाला जो फ्लैग है वो उसको आर्च की पर्सपेक्टिव दे रहा है और ये लेडी उसको कर्व पाथवे का पर्सपेक्टिव दे रही है। So जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है that can change things. मैंने अपनी किसी प्रेजेंटेशन में वो आपको अर्थ की रोटेशन वाली वीडियो दिखाई थी। It's worth seeing. There is an astronomer जिसने वीडियो रिकॉर्ड की ऑफ द मिल्की वे, और जो टेलीस्कोप के जो कैमरास हैं, जो टेलीस्कोप्स हैं, वो यूजुअली ट्रैकिंग माउंट के ऊपर लगे होते हैं। उनकी जो ट्राइपॉड्स हैं, दे आर नॉट स्टैटिक। वो आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से एंड बेस्ड ऑन व्हाट स्टार यू आर लुकिंग एट, वो उसकी मूवमेंट को कैच करते हैं और उसके साथ साथ ट्रैक करते रहते हैं, सो दैट लॉन्ग एक्सपोजर जो आर्स का एक्सपोजर है वो भी हो सके विदाउट दैट स्टार गोइंग आउट ऑफ द फील्ड। So what that guy did was he tracked the Milky Way near the horizon. तो उसी एक शॉट the frame of reference with galaxy, और उसकी frame of reference के मुकाबले में अर्थ फिर आपको मूव करती है। So frame of reference makes the difference. M.C. Escher, 1972. This is one of his very famous paintings. अगर इसको और से देखने की कोशिश करें, तो there is this guy looking at a scenery in a gallery. और उस सीनरी में ये कोस्ट लाइन नजर आ रही है और ये सारी बिल्डिंग्स हैं, और ये वो गैलरी है जिसके अंदर ये सारी एग्जीबिशन हो रही है। सो दिस इज अ परपेचुअल पेंटिंग जो अपनी ही गैलरी के अंदर खड़ा हुआ वो देख। यू गेट द पैराडॉक्स? सलमान ये गैलरी में खड़ा हुआ है, ये पेंटिंग को देख रहा है, ये गैलरी में बाकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, बट इस कोस्ट पे ये सारी बिल्डिंग्स, जिसमें ये बिल्डिंग वो है जिसमें ये सारी पेंटिंग्स लगी। ट्विस्टेड। अगेन इस तरह की इसकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। अगेन अ वेरी पॉपुलर पेंटिंग कॉल्ड डे एंड नाइट। The space between the birds at one end becomes the birds at the other. Oh yeah, there's blackbirds on that side. Yes. I just saw those. How animals can evolve. Anyway, इस सारी चीज का मतलब क्या है? ये हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, और कोई भी चीज ऑब्जेक्टिवली रियल है ही नहीं। हर चीज हमारी परसेप्शन जो है वो उस पे बेस्ड है, हर चीज सब्जेक्टिव है, हर चीज इंटरनल है। इवन आवर कॉन्शियसनेस, इवन द वर्ल्ड अराउंड अस, या कम से कम उसकी परसेप्शन, द वे वी परसीव। It's not even like a tool that we can trust, because Yes. it's editing software. That is what I'm saying. That is what I'm saying. कि जो हमारी परसेप्शन है, that is not a representation of true reality out there. Perception can very easily be fooled. It can be confused. Why? What else do you think Dr. Suleiman does all day?
He is there to fool our perception. ये जो virtual reality है, augmented reality है, अब तो ये नाम ही paradoxical है. They're not realities because हमारी अपनी reality की reality है. It's our own subjective experience. ठीक है? T.S. Eliot ने there was this portrait जो उसने कोई लिखी थी और उसमें उसने कहा था कि we shall not cease from exploration. And the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time. This is what is happening. हमें वापस spirituality की तरफ ये सारी चीजें लेके जा रही हैं, even a hardcore objective thing like physics. How beautiful you see this scene, right? Yacht खड़ी हुई है, खूबसूरत ऊपर विला है, you know, इसकी reality को हम कहीं deny कर सकते हैं. Time हो गया मुझे पता है. ओह, presentation वाले आए नहीं हुए ना? आ गए हैं. अच्छा बस ये last slide. अगर सबसे emphasize करने वाला point तो तूने रोक ही दिया. How can we deny the reality of something like this? We can't. That is because that's how we are programmed. That's the big test. To recognize that this is not real. To understand that this is all subjective. To know that true reality will at some point be revealed. And that's exactly what Allah Ta'ala says in the Quran. जिसकी चीजों की हमें समझ नहीं आती, वो अब फिजिक्स से प्रूव होनी शुरू हो गई हैं. The life of this world is no more than an illusion. Surah Al Imran, verse 140. ये चीजें दी हुई हैं, ये जो illusion बार बार रेफरेंस है कुरान पाक में कि ये illusion है. इस रियलिटी को कौन डिनाई कर सकता है, लेकिन ये भी रियलिटी नहीं है. Thank you very much. Think about it. I leave you with no. What I'm trying to tell you is I leave you with a lot of questions. And I want you to mull over them, think about them, and understand and pass them on. Thank you very much.